guys, today we are shooting for our new episode and I am back, your host Radhika. Stay tuned with me to know who is our next celebrity guest. His personality starts from his name, so stylish but so Desi in his attitude. He has been behind the radio mic more than 13 years and awarded as the best radio presenter across the UAE. He is none other than Ujjwal Khanna. Guys, now it's time to welcome our celebrity guest, Mr. Ujjwal Khanna. मेरे सामने बैठे हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है Mr. Ujjwal Khanna. He is a very famous RJ. Mr. Ujjwal, how are you doing? Very well, thank you for having me. Celebrity बोल के आप हैं, हमारे लिए हैं. मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि we are having a chat rather than an interview. So yeah, I mean, I'll call you Ujjwal. Yes, okay. That's the way to do it. Ujjwal, हमारी audience बहुत excited है, मैं बहुत excited हूँ. And I love your voice. Thank you. Seriously, and it's really my honor कि आज सामने बैठ के मैं हमेशा रेडियो पे आपकी आवाज़ सुनती हूँ, गाड़ी चलाते हुए सुनती हूँ, घर पे काम करते हुए सुनती हूँ, झाड़ू मारी होती हूँ और आपकी आवाज़ सुन रही होती हूँ. I think it goes for us also, है ना? जब हम स्टूडियो में बैठे होते हैं, जब हम सुन रहे होते हैं ना अपने आप को ही, हमें लगता है कि हमें कौन सुन रहा होगा. Right, पर आपको सब सुनते हैं. And when we happen to meet people like you and our listeners, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हाँ, actually जनता सुन रही है हमें. बहुत सुनती है और आपकी आवाज़ ऐसी है कि मतलब एक बार सुनो तो लगता है कि बस सुबह से रात तक सुनते ही रहो. Thank you. Seriously, you are blessed with the amazing voice. Thank you. चलिए अब बात करते हैं आपकी स्टार्टिंग जर्नी की. सब जानते हैं एज अ आरजे उज्जवल को. मुझे पब्लिक को बताना है उज्जवल एग्जैक्टली कौन है, कहाँ से आपकी जर्नी, आपकी बचपन की बात करते हैं. आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपने कॉलेज कहाँ से किया, कब दुबई आए, कैसे आरजे बने, पूरी बात हमें बताएं. सो बेसिकली आप मेरे को बहुत पहले लेके जा रहे हो. मैं इतना भुलक्कड़ किस्म का आदमी हूँ. आर्टिस्ट लोग जनरली लॉस्ट होते हैं. मेरे किस्म में मेरे को जितना भी याद है मैं बता रहा हूँ. राइट फ्रॉम द टीन डेज आई वाज अ वेरी नोटोरियस चैप, है ना, इनटू नॉटी स्टफ. वो तो दिखता है अभी भी. एंड उसके बाद देन आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, वहाँ पे था मैं. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. And post that, I got into my schooling, which is a school in Rohini. I'm from northern Delhi, which is the north part of Delhi. Full on Punjabi. पूरा ठेठ Punjabi, outlandish, in your face. जो तो आनु चाहिए वो तो आनु मिलेगा. Expressions, all PJs, जो भी हो सकता है, दाल मखनी, everything is there, literally. Tandoori chicken. Tandoori chicken. No, I'm a vegetarian Punjabi though. Really? Yeah. Okay. I'm a vegetarian Punjabi. So that happened, and then of course my entire build-up happened in Rohini, and I did my college from North Campus. It's Hansraj College, if you've heard about that. Yeah, very famous one. Shah Rukh Khan ka college hai, koi bhi nahi bhul sakta. बिल्कुल, very famous. I remember the first time I went into the college, I got a sweatshirt of SRK, and that I guess was a hint that this is why I want to get into. I don't know, मुझे आपकी पर्सनालिटी देख के भी कुछ सिमिलैरिटी लगती है. पता नहीं है. पहले किसी ने आपको ये बोला है? नहीं बोला, पर मुझे ऐसा लगता है. Okay. Maybe I would be like, but he's a legend. He's a legend. Obviously. He's so articulate. He's so full of wisdom. But anyway, coming back to me, and then I did my grad there, and then I would not say that I had a pretty normal set in terms of the finance of my of my family. And that's why I wanted to start early. मेरे को काम जल्दी करना था, जल्दी शुरू करना था, because I wanted to become a father's head as well, है ना. मुझे चाहिए था कि मैं responsibility share करूँ. To give the support to your father. Yes. And then I thought, let me start early, and I thought cabin crew is a great medium. And I think I started at the age of 20 after I did my grad. That's great. And I started working as a cabin crew. I got through one of the reputed airlines, which is not operating anymore now. So hopefully, not take name. Hopefully it'll come. It'll come. So I did my 5 years of cabin crew there. Traveled a lot of places. Enjoyed my life. Spent a lot of money. Foolish money, नया नया पैसा देखता है बच्चा 20 साल का, तो ऐसा लगता है कि सब उड़ा दो. Just कमाओ और उड़ा दो. तो वही मेरे साथ था. Just to save a bit as well, but then that happened, and then came this thing, this bright light, where I thought, okay, what next, Ujjwal? Do you want to do this forever? Because at time it becomes very treacherous. You think cabin crew's job is easy. It's not easy for all the cabin crew people. You rock. For the kind of travel itineraries you do, 8-10 घंटे की आपकी फ्लाइटें होती हैं.
And then I thought, okay, I think I can speak relatively okayish, so let me get into a place where I can obviously, you know, express myself much more beautifully. And then came in the broadcasting journalism spectrum in my head. कि broadcasting media में घुसते हैं, journalist बनता हूँ, कुछ editor बनूंगा, कुछ लिखूंगा और कुछ जाऊंगा correspondent reporter का काम करके, उसके बाद मैं editor desk पे आ जाऊंगा। तो आपको journalist बनना था, लेकिन वो बने नहीं। Thankfully नहीं बना। आजकल के scenario को देख के अच्छी बात है नहीं बना। Then somebody advised me, why don't you do radio? Radio करना अच्छा medium है, अपने आप को express कर सकता है। मैंने कहा हाँ, not bad. And then I did my internship for about a year in one of the radio stations back in Delhi. It was called Radio City 91.1 and I learned a lot. लिखना कैसे है, background कैसे है, सबको लगता है कि radio is just radio presenter. Actually, radio presenter का बहुत सीमित काम है. It's a teamwork. It is an absolute teamwork. It's the producer's job, it's the copywriter's job, it is the admin people, it is the traffic team, everything compiles in and then you get to see the real radio presentation. Right. It happens. So content curate करना, copywriting, advertisements के लिए lines लिखना, jingles के लिए line लिखना, गाने बनाना, washing powder निर्मा, all those ads आप सुनते हैं, वो लिखना भी तो पड़ता है, वो लिखेगा कौन? So जो लिखते हैं आपको काफी practice करनी पड़ती है और एक rhythm में आ जाता है। नहीं, initially it becomes. Initially you have to take lots of effort and slowly it becomes your habit. नहीं, initially tough होता है, because आपको अगर कोई client pitch करता है कुछ और आपको किस हिसाब से लिखना है, फिर क्लाइंट आपके मुंह पे पेपर मार देते हैं, यार ये क्या लिख रहे हैं, किससे लिखवाया, बेकार है. So counts after counts after counts after counts, and then eventually you come to a point where you start writing for the clients as well, and you start writing for presenters as well, and that's exactly happened with me. And then they tested my voice. उसके बाद they gave me a slot which was a meek slot, है ना, जो सुनता नहीं, आधी रात को अपने आप ही बोलता रहेगा, कुछ तो भी है ना वैसा वाला. And it was a great exercise because मुझे अपने आप को polish करने का बहुत मौका मिला. Obviously, that was a good opportunity for you. So I polished myself, and then I got through the prime time, which is a breakfast. So that is India, and then I worked in Jaipur. I used to do a pan-India show as well, जो 45 markets में जाता था. That was called Radio City Top 25, and then I switched to Pune. I did my 1 year radio in Pune before Dubai called me, and these guys called me up and they said, why don't you join us? So when you came to Dubai? Dubai यार 17 December को मेरे ख्याल 6 साल हो जाएंगे. Oh really? 17 December? Yes. My birthday. Oh, you're a Sagittarian? Yes. I'm a Sagittarian too. I'm oh, really? 1st December. Oh, so we'll celebrate our birthday together. केक का है भाई? अभी नहीं, next month. हम काटेंगे आपके वहाँ पर आके काटेंगे 106.2 एंड ऑन एयर जाएंगे, है ना? ओके, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, सिर्फ आरजे नहीं है, इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई हैव सीन ऑल योर प्रोफाइल, जिसमें कि आप कुकिंग करते हैं और इतनी सारी कुकिंग जितनी कि मुझे भी नहीं आती है. आई हैव सीन आप कितनी तरह की डिशेस बनाते हैं, तो ये आपका नेचुरली एक हुनर है या सीखा है? आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली बार कुकिंग करी थी तो मैंने 2 लोगों के लिए 2 किलो छोले भिगो दिए थे. और वो मेरे पास बर्तन भी इतना छोटा था, छोले इतने ज्यादा सोख हो गए थे, बाहर आ गए थे. और जब मैं कुकर and it all start, कुकर फटा नहीं, कुकर में गए ही नहीं छोले. क्योंकि obviously ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अकेले रहने लगा. When I started living alone and when you have no one around, तो कुछ मेजरमेंट मतलब नहीं पता था हिसाब की किस हिसाब से करना है. मम्मी भी कुछ बोल रही है, कुछ तुम समझ कुछ और रहे हो, and oh my god. तो मतलब उसमें भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट आपके हुए हैं और तब जाके इतनी सारी डिशेस आप बनाते हैं. And that too I can only do Indian, by the way. I can't do like continental Chinese. I can do the desi khana. But not this noodles and all that. I can't do that. आपकी पर्सनालिटी के लिए यही कह सकते हैं कि you look so stylish, but वो देसीपन जो है ना वो अभी भी आप में है completely. Absolutely, I can't get desi out of me. Obviously, हमें क्यों छोड़ना अपना देसीपन? We are proud to be an Indian, and that पंजाबी होना it's like वो देसीनेस होती है. अच्छा, अभी आपने जैसे कि इंडिया में इतना ट्रैवल किया है, ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल ट्रैवल किया है बहुत. कैबिन क्रू थे तो आपने इंटरनेशनल भी ट्रैवल किया. कौन सी ब्यूटीफुल कंट्री आपकी फेवरेट है? वाइल्ड टाइम एज अ कैबिन क्रू या उसके बाद भी? कहीं पर भी जहां पर भी आप घूमे हो. The latest that I've been was to Amsterdam. Okay. I wouldn't say it's one of my best place. It's the best place, but one of the best place. But apart from that, I think Bruges is a brilliant place. It's like 2 hours
train ride from Brussels in Belgium. Okay. और बड़ा खूबसूरत है ना, बड़ा रोमांटिक तो है ही है, और फूल हैं, you know, natural organic light चल रही है, और ऐसा लगता है कि you're in the midst of, you just want to sit and relax, and you're in the midst of real life. You know, at times what happens, you know, of course, you know, Dubai has blessed us with so much things, but here the fact of the matter is that, you know, we live a very over the top life. But sometimes it's so important to connect yourself organically. Right. And for that you need to either go back to your place or to a place where you find and you can connect nature. Right. तो मुझे बड़ी attract करती हैं वो जगह जहाँ पे मैं nature से connect हो जाऊँ. चाहे पहाड़ में जाना हो या फिर पानी के पास जाना हो या फिर एक छोटे से एक गाँव. So you'll not believe the fact that if I ever go to all these places internationally, I don't ever stay in a city. Really? I never stay in a city. I always go to the countryside. I always stay there. जहाँ आपको सुकून मिले. और बहुत basic तरीके से. Basic तरीके से. Because that's very important to keep finding your organic self. Otherwise, इस शहर में आप भूल जाओगे अपने आप को बहुत जल्दी. वो तो सच है. यहाँ की लाइफ लाइक सुबह मॉर्निंग जाना, शाम को आना, वहीं अपनी एक रूटीन फॉलो करना. Even in Mumbai also we have a same kind of life. Okay. आप खाने के शौकीन हैं? जी. किस तरह का खाना आपको पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? देसी खाना यार. देसी में क्या? I think राजमा चावल. All Punjabi eat राजमा चावल. I must say that, you know. बनाते बहुत बढ़िया. आप जो बने हैं डैड, you know, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में, कैसे मिले, कब हुई आपकी मैरिज, आपका some romantic part if you would like to share with us. It's a very interesting conversation actually. A lot of my listeners, they already know my story because I also do a segment in my show which is called Love Bite, जहाँ पे मैं प्यार की कहानियाँ पढ़ता हूँ. Right. And मैंने अपनी Love Bite भी पढ़ी थी जब मेरी शादी हुई थी, और हमारा connection actually radio पे हुआ था. When I was figuring out a girl for my Lodi shows, one of my Lodi होती है ना पंजाबी जी जी. I was figuring out one Punjabi girl who can sing and, you know, मारो टप्पे and बोलियाँ शोलियाँ, and then her name was tagged on Facebook. Okay. Through one of the mutual friends. Okay. And फिर वहाँ से I spoke to her, and then she was working in a call center at that time, and she was not allowed to even take her phone inside because they're supposed to confiscate the phone or give their phones away at the guard. But then obviously she. But this was all happened in Dubai. This was happening in Dubai. Yes. It happened in Dubai. So then I got through her. I got the access to her, and then I spoke to her and I told her, why don't you send across your samples to me? And she said, okay. How many samples do you want? I said, just a couple here and there. Let me see if it's worth it to go on air. Right. And when I heard it, I was like, boy, oh boy, she's got a very punk to her. She's got, you know, the organic desiness जो मुझे चाहिए थी. You found that. And also, I always wanted to get hooked to a girl who had curly hair. Oh. So curly hair also gives me a lot of, you know, attraction. Ting, ting. Oh, curly hair. Curly okay. hair, like that. So I didn't see her, by the way, at that time. So मैंने आवाज़ सुनी, then I told her thank you very much, the show went well. और उसके बाद straight up to I saw her on Facebook, I stalked her, said okay, I think this girl looks cool and nice. Maybe I should say thank you in advance. चाय पे कॉफी पे मिलते हैं और वहाँ पे जाके कुछ बात करेंगे. And she also said yes. Okay. And then we met on coffee. We hit off from there. And so now you're a father. And now I'm a father after of 5-month baby, of right? a 5-month lad. My boy's name is Agam. Oh. And I'm a learning dad. I'm making mistakes every day. It's and happened. I'm learning every day. And it's such an experience. It's a part of life. A lot of people gave me so many things about यार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बाप बन जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी. No, nothing. It's a beautiful journey, you know. Once you get into the family life. Yeah. And hats off again to the women of how my wife and how you have raised your children up. It's always the women. Men are there somewhere. Yes. You know, around somewhere there. Okay, we'll try to help as much as we can. But जो माएँ हैं. True. I've seen my wife getting up 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock in the morning and feeding your babies and, you know, making them sleep, they're not sleeping, still waking up. और मेरे को ऐसा लगता है कि औरतें जो है ना वो बहुत जल्दी vulnerable हो जाती हैं. True. है ना, बच्चे होने के बाद बहुत vulnerable हो जाती हैं. I've seen the most confident women, you know, just getting so docile and just getting so vulnerable. हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे नहीं हो गया, भूख नहीं है. So that is something that I can never ever fill in for what my wife is doing for my child, of raising a human being, a good human being. Okay. So
It's going well. I'm changing good nappies. अच्छे मेरे को पहले नहीं आता था. I'm changing nappies. I'm trying to, take him to rounds. Behaving like a good father. Yeah, I'm trying to. चलिए, अब मुझे ये बताएं, अगर आपकी तरह किसी को, आरजे बनना हो, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरजे बनने के लिए कोई कोर्स नहीं होता. कुछ नहीं होता. Whatever, Naturally you have. Naturally तो है ही, but जो भी तुम ऐसे देखते हो इंस्टीट्यूट्स जो तुम्हें आरजे बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, maybe they're grooming you to an extent. Right. I'm not saying, and I'm not denying the fact that they're not good institutions, but I'm saying the institution itself is a radio station. तो आपको ज़्यादा पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सीधा रेडियो स्टेशन को अप्रोच करना है और उनको बोलना है कि हमें आपके यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है. As simple as that. तो वो किसी को भी करने देते हैं? नहीं, उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं. अच्छा. So if they think that you have a worth, अभी I'm not stereotyping, मतलब मैं hypothetically कह रहा हूँ कि अगर इंजीनियर कल को बोलता है कि मेरे को यार मैं बोर हो गया, मैं आरजे बनने चला जाता हूँ. You need to have a little bit of something you have it to go to that direction. Correct. कुछ नमक चाहिए. Either you're articulate, either you're confident, you've got a great personality, या फिर आप बोलते अच्छा है, या फिर आपका content बहुत तगड़ा है, आप लिखते बहुत अच्छा है, आपका जो कनेक्ट है विद एंटरटेनमेंट बहुत तगड़ा है, करंट अफेयर्स में आप काफ़ी रुचि दिखाते हैं. Right. So मतलब you should have some base to go to. Yeah, you need to have some spark. Right. And that is a spark that radio presenters and radio stations look out for. If you have that little bit of 440 watts in you, then you are hired. And then of course you do a lot of work. Okay. Like content curation, writing, advertisements के लिए लिखना, stations के लिए लिखना, jingles लिखना, and अपनी voice test करना, है ना, उसको निखारना, उसको कैसे आप improve कर सकते हो. Enunciations पे काम करना, आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ होना चाहिए. Enunciations, pronunciation अलग है. Enunciation is your तालु. See, it's something new I'm learning. Okay. तो ये अगर मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, तो how clear it is. वो कितना clear है. Words कितने clear बोले जाते हैं, right? सहज और साफ होने और स्पष्ट होने चाहिए. स्पष्ट. ऐसा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मफल हो रहा है मुंह में शब्द आपका. Okay. So enunciations पे काम कराया जाता था उस ज़माने में. अभी रेडियो थोड़ा मॉडर्न हो गया है. रेडियो कहीं ना कहीं फंस गया है इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट के बीच में. रेडियो कहीं फंस गया है. रेडियो का सबसे बड़ा चार्म ये होता था कि हम लोग कभी दिखाई नहीं जाते थे. सिर्फ हमारी आवाज़ ही कनेक्ट होती थी. everyone can see you. अभी इंस्टाग्राम है, सोशल नेटवर्किंग आ गया. And I completely hate for the fact that we ourselves as radio people are maligning it. Because बहुत ही खूबसूरत मीडियम था. 10-10, 11-11 साल तक प्रेजेंटर्स की शक्लें नहीं दिखाई जाती थी और सिर्फ एक आवाज़ से कनेक्ट था. फ़ोन उठाओ, जॉक से बात करो, फ़ोन रख दो, एक आवाज़ थी. अभी आप देख सकते हो, which is again the need of the hour. आजकल का वक्त ऐसा है कि आपको सोशल पे जाना है, हम YouTube पे बात कर रहे हैं. But having said that, I still like that old radio than this new radio. I'll always go back to that old radio. Okay. लास्ट में एक सॉन्ग अगर मैं बोलूं गाने के लिए. नहीं आप गा सकते. मैं आपके लिए गाना बजा दूंगा रेडियो पे. मैं आपके लिए 1 घंटा डेडिकेट कर दूंगा. लेकिन नहीं, आप बजाते हैं ना, तो आज मुझे आपसे सुनना है सिर्फ एक लाइन. अगर नहीं आपकी जो वॉइस है तो ऑब्वियसली यू कैन सिंग, राइट? व्हाट सॉन्ग डू यू वांट मी टू सिंग? कोई भी. अच्छा, मेरे लिए कोई डेडिकेट करके गा दीजिए. तुम ही देखो ना. ओके. ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ, तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई ऐसी चांदनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नो फॉर मी इट वाज अमेजिंग. एडिट कर देना ये वाला प्लीज. कुछ एडिटिंग होगा. बट थैंक यू सो मच उज्ज्वल, आप यहाँ आए, हमें टाइम दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमसे इतनी सारी बातें की, एंड द मोस्ट हमको आपने इनवाइट किया नेक्स्ट वीकेंड के लिए. थैंक यू सो मच. आप घर पे भी आए, आप रेडियो स्टेशन भी आए, आप हमारा काम देखिए हम कैसे करते हैं. I'll be more than happy to bring you to the studio and see as to how do we work. It's a fun job. It's the best job on this earth. Absolutely. And I think I'm blessed. Thank you very much. Thank you so much.